Hello and welcome. In this lab session, we will learn how to retrieve open reading frames from the ORF finder present in the NCBI database. By the end of this session, you will learn how to utilize NCBI database to predict and locate potential ORFs within a DNA sequence. You will also learn how to submit data to the NCBI database and retrieve ORF, as well as interpret the results obtained from ORF identification and analysis. We will cover a list of tools that can be used to predict ORFs like ORF Finder, Augustus, BioEdit, Expressly Translate tool, Emboss, GetORF. But in this session, we will specifically focus on retrieving ORFs from the ORF finder in NCBI. Now let's take a look at the interface of NCBI, which stands for the National Center for Biotechnology and Information. After we can see on the left side of the home page, you will find a detailed list of resources like DNA and RNA, domains and structures, etc. On the right side, some of the most popular resources are listed, such as the BLAST tool, SNP, Protein, PubChem, and many more. In the center of the page, you can find the information on how to submit your data, how you can download your data, and how you can find help regarding documents, tutorials. This is the search box where you can search specific data according to your need. And these are the different databases of NCBI like books, gene, genome, geodatasets, homology, and many more. In the drop-down menu, you will find a database named gene. You will select the database gene and then you can write any gene on the search box. So here for this practical, we are going to search fibroblast growth factor 4 gene. When we search that gene, we will see this type of interface in which total number of genes in record against our query are mentioned. And then we will select this specific gene named fibroblast growth factor, whose species is Homo sapien and whose gene ID is 2249. After clicking on this gene, we will see this window having a basic information of gene like official full name, official symbol, gene type, ref status, and summary of this gene. When we scroll down this window, we will see a FASTA link. When we click this FASTA link, we will see this type of window in which we have NCBI reference sequence, session ID, this FASTA sequence. We can simply download this FASTA sequence by clicking on to send to button. We can also simply copy this sequence and paste somewhere else where we want, and we can also use this accession ID for our research depending on the need. So, to access the ORF finder, we will return to the NCBI home page. Click on A to Z resource list, select the letter O, and then click on ORF Finder, Open Reading Frame Finder. This will take us to the home page of the ORF Finder database.
ORF finder searches for open reading frames in the DNA sequence you enter. The program returns the range of each ORF along with the protein translation. Use ORF finder to search newly sequenced DNA for potential protein encoding segments. You can also verify predicted proteins using newly developed Smart Blast or regular Blast PE. Here we will find a box where we can paste the FASTA sequence or accession ID. We can also select the length of the ORF from the drop-down menu. The ORF length should have a suitable threshold, neither too short nor too long, to avoid false positive results. Additionally, we can choose the genetic code to search for ORFs against a specific species or use a standard basis. So here we paste the sequence which we have copied from the recent NCBI fibroblast growth factor 4 which we have recently learned, and then we select the minimal length of ORF is 150 and we select the genetic code on a standard and we submit this. Now here one thing is noted that we ignore nested ORF. It's totally up to you that whether you want to ignore nested ORFs or not. So what is nested ORFs? Simply nested ORFs are ORFs within a ORF. This is the resultant window when we submit our gene FASTA sequence. The first box displays the number and the location of open reading frame for easy identification and examination of their positions. The second box shows the selected ORF sequence and allows users to choose how to display it. The third box provides information on the total number of ORFs, their length, their position in both nucleotide and frame-wise formats. The fourth box offers the option to perform a blast search, a powerful tool for identifying functional and evolutionary relationships between sequences. The fifth box contains the 6 translational frame tab representing the 6 frames of the given gene. Now you can see that this is the window where if we find or write a specific basis number on this find bar, you can see that it would move to the specific position. For example, आपको ये मालूम करना है कि आपकी किसी भी न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, कौन सा पेयर प्रेजेंट है, तो आप वो नंबर, वो पोजीशन इधर सर्च पर लिखेंगे और वो जो है उस जगह पर ले जाएगा जहाँ पे वहाँ पे जो से भी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमने 88 लिखा है और 88 पे जो है वो हमारा G और C जो है वो प्रेजेंट है। फिर ये एक पूरे न्यूक्लियोटाइड्स की डिफरेंट बार है। ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब ये वाला हाईलाइटेड है क्योंकि ये लॉन्गेस्ट ORF है अमंग ऑल ऑफ दीज। सिंपली नेक्स्ट, दिस इज द सेक्शन। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे ये जो भी 9 और 10 ORF हैं इनको हम किस तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं। लाइक अगर हम डिस्प्ले ORF एज पे क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा कि आप प्रोटीन सीक्वेंस चाहते हैं, आप न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चाहते हैं, या आप CDS ट्रांसलेशनल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। ये जो है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है क्योंकि हमें AT, GT, AA ये सब जो है वो हमें इधर
न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पता चल रहा है। और अगर हम इधर CDS ट्रांसलेशन देखें तो वो हमें ऊपर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी देगा और उसके साथ जो नीचे है वो हमें प्रोटीन के सीक्वेंस भी देगा। पर अगर हम खाली प्रोटीन सीक्वेंस सेलेक्ट करें तो हमें सिर्फ प्रोटीन का सीक्वेंस देगा। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इस वाले टेबल में अगर हम स्पेसिफिक ORF को सिलेक्ट कर दें तो वो वाला जो ORF है वो इधर मार्क हो जाता है। लाइक वी वांट टू सी कि इधर ORF 6 किधर प्रेजेंट है, तो हम जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे उस एरिया को मार्क कर देगा और हम अगर कर्सर को यहाँ पर लेकर आएंगे तो वो हमें उसकी पोजीशन भी बता देगा। जैसे कि इधर भी मेंशन है तो वो 3084 से स्टार्ट हो रहा है और जो स्टॉप कोडोन है वो 2833 पे आ रहा है और ये नेगेटिव स्ट्रैंड है इसलिए, और जिसकी लेंथ है वो 252 न्यूक्लियोटाइड्स है, जबकि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो 83 हैं। अब इधर क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमारा जो स्टॉप कोडोन है वो 2833 पे आ रहा है और 3084 पे स्टार्ट आ रहा है, इसलिए क्योंकि हम ये रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं इस वजह से। उसके बाद हम अगर डाउनलोड करना चाहें अपने ORFs को, हमने चाहते हैं कि हम अपने ORF को डाउनलोड करें, तो डाउनलोड करने के लिए हम डाउनलोड मार्क्स सेट पे जाएंगे और उसमें डिफरेंट फॉर्मेट है। या तो आप प्रोटीन फास्टा खाली प्रोटीन सीक्वेंस ले सकते हैं, आप CDS सीक्वेंस ले सकते हैं, आप सेशन के थ्रू ले सकते हैं, एनोटेशन से ले सकते हैं, या आप फीचर टेबल के अकॉर्डिंग जो है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप इसके मुताबिक अपना ORF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दिस इज द ऑप्शन वेयर वी कैन फाइंड द सिमिलैरिटीज बिटवीन ORF। फॉर एग्जांपल आप ORF नंबर 5 को या 7, 1, 4 किसी भी ORF को देखना चाहते हैं कि वो ORF बाकी और किसी स्पीशीज में जो है वो कितना कंजर्व आ रहा है या एवोल्यूशनल स्टेटस उसका क्या आ रहा है, तो हम इधर से ब्लास्ट भी कर सकते हैं। और उसके लिए हम कोई स्पेसिफिक वेबसाइट या तो हम यूनिप्रॉट, स्विसप्रॉट ले सकते हैं, हम रेफरेंस प्रोटीन्स ले सकते हैं, नॉन रिडंडेंट प्रोटीन सीक्वेंस ले सकते हैं। इट वुड बी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट और हम उससे जो है वो ब्लास्ट कर लेंगे। एंड दिस वन इज 6 फ्रेम ट्रांसलेशन। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें वो ऐसे 6 फ्रेम ट्रांसलेशन फॉर्म दे देगा जिसमें हमें पता चल रहा है कि जो स्टॉप कोडोन है वो स्टार्ट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और बाकी जो है वो स्टार्ट कोडोन सिंपली ATG से मेंशन है। इधर भी डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं कि या तो आप 6 फ्रेम ट्रांसलेशन लेना चाहते हैं फुल लेंथ, मतलब कि A to Z जितना भी हमारा सीक्वेंस है, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, उसमें वो पूरी की जो पूरी है वो ट्रांसलेशन दे देगा। जबकि अगर हम ORF ट्रांसलेशन सेलेक्ट करेंगे तो जो हमारे 10 ORF आए हैं उसमें से सिर्फ उन 10 ORF की जो है वो ट्रांसलेशन जो है वो इधर रिप्रेजेंट करेगा। So this concludes the complete overview of the ORF Finder. Thank you for your attention.